Start করছি. Sure. Hello. Hello Hello. everyone. Hello. So, we are back again after almost a month, I think. So we guys were busy in December. We went to Eat India, and then the holiday season started. So for almost a month, we missed this live session with Krish and Shavik, and we are back with some great news. And markets are green today. People are enjoying with the recent updates that came yesterday only. So let's start. हम लोग बात करते हैं कि कल क्या हुआ ऐसे जिसके वजह से आज हम लोग इतना हरियाली देखने को मिला है, और उसके साथ साथ कुछ और इंडिया रिलेटेड न्यूज़ जिसके वजह से आपको शायद प्रॉब्लम में पड़ सकती है. तो अगर आप इसको कोई भी सोशल चैनल से देख रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, तो जल्दी से आप जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें. सो चलिए क्रिश, आज शुरू करते हैं. तो आज का शुरुआत का न्यूज़ क्या रहेगा आपकी साइड से? थैंक यू सैम. तो आज की क्यों मेरे को लगता है इस हफ्ते का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, बल्कि इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, barring some big hacks and big crashes, I would probably think this is it. Like, crypto has made it. So ETF, I think this has been there for a long time कि कब ETF अप्रूव करेगा SEC, अभी तक क्यों नहीं कर रहा है, what are the reasons, etc etc. So all these questions and everything is answered. ETFs have been approved. 11 ETFs अप्रूव हुए हैं from the SEC. and कुछ दिन पहले जैसे आप लोगों को पता ही होगा गैरी गेंसलर का, जो कि SEC के चीफ हैं, उनके ट्विटर अकाउंट हैक हो गए थे. उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो इज दिस, क्रिप्टो इज दैट. तो उसी टाइम में मेरे को लगा था कि हाँ, ETF is already approved now, it's time for some FOMO. And another thing happened कुछ देर पहले कि I think मैट्रिक्सपोर्ट ने रिपोर्ट पब्लिश किया था कि what if this ETF is not approved, बिटकॉइन यहाँ से 20-30% गिरने वाला है. तो जब भी कुछ खराब न्यूज आता है, आई थिंक दैट्स अ टाइम व्हेन यू शुड बाय क्योंकि already the worst is taken care of. And I think few of those people whoever was smart enough actually got into this even during that time. तो बिटकॉइन ETF अप्रूवल के बाद जो हुआ है वो है कि मार्केट सेंटिमेंट बहुत बुलिश हो गया है, क्योंकि ETF is not like a derivative product. In order for you to do this ETF, you have to offer this ETF to somebody. तो आपको वो अंडरलाइंग एसेट जो कि बिटकॉइन, यू हैव टू बाय इट. तो जैसे आप लोगों को पता है कि देयर इज ओनली गोइंग टू बी 21 मिलियन बिटकॉइन. अब उस 21 मिलियन में रफली 2 मिलियन बिटकॉइन इज ऑलरेडी लॉस्ट बिकॉज ऑफ somebody lost their private key, lost the hardware equipment, whatever. तो अभी 19 मिलियन ETF में से समझ लीजिए कि there's only 1.8 million or so which is going to be minted more, क्योंकि 19.2 19.3 मिलियन ऑलरेडी मिंट हो गया है. तो 19.2 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 17 हो गया रफली. तो 17 से लेट्स से 80% ऑफ दैट और 85% ऑफ दैट 17 मिलियन is held by people who are not going to sell, or at least not going to sell at this price. और बाकी जो है that is in the exchange. So now all these big giants like BlackRock, ARK Invest, Invesco, सबको को BTC खरीदना पड़ेगा ओपन मार्केट से to provide it to the institutional investors, and that is going to move up the price. और आपको ये भी पता है कि बिटकॉइन हाफिंग होने वाला है मार्च एंड में. तो effectively with that, the amount of bitcoin that is coming in circulation will be halved. The cost of mining will be doubled, quadrupled basically. So all these things puts a huge pressure on the price of bitcoin to go up. So there is no way the price of bitcoin go down unless there is like a big hack, big news, big fraud coming in. But then also it will be very temporary, and that's also a time when you can think of getting in this space again. So Bitcoin ETF does a lot of things. I think this is the most important thing कि अभी institutional money यहाँ पे आ सकता है. जैसे यहाँ पे है बहुत सारे 401k retirement, like 401k basically is like retirement savings
Americans do, US people do. So now because of these ETFs, these retirement funds can put money into Bitcoin, जो कि इसके पहले नहीं था. The other thing that probably going to happen कि since these traders who are going to hold these, they will also have some leverage कि they can get, you know, 50, 30, 50% of that amount that they're putting in ETF to trade. So market liquidity बढ़ेगा इससे. So let's say you're buying a Bitcoin and instead of doing anything, it's just there, right? So there's no liquidity for anybody to use the money that they put in Bitcoin. But in ETF क्या होता है कि if you buy the ETF, you can send it to somebody and they can give you a loan or they can give you a credit up to 30 to 50% of that amount and you can trade with it. So that's what big funds will do. There will be loans available जो कि Bitcoin में DeFi में होता ही रहता है कि you can put in your Bitcoin, you can put in your Ethereum, you can take a USDT loan. So all the DeFi projects are doing it, but now this will be available for the institutions as well on a totally legal and legit platform. इसके साथ ही साथ जो मेरे को लगता है कि और बेनिफिट होने वाला है लोगों को, we don't have to go and convince people anymore कि Bitcoin is there to stay. All I need to tell कि BlackRock के पास ETF है already. If you want, you can buy the underlying asset, or you can wait till somebody in India comes in with a plan, right? So this gives a lot of legitimacy in the space. I think these are all the great things that is probably going to happen. It's not a matter of if, once again it's matter of when. और थोड़े से और बताते हैं कि 13 शायद ETFs थे, like 11th I got approved. तो 11 में से 9 ETFs के कस्टोडियन है Coinbase इंस्टीट्यूशन, और एक का है बिटगो और एक का है जेमिनाई. So no matter what happens, Coinbase's shares are going to go high, probably, because now Coinbase has a legitimate business where uh, they don't have to fight anymore with SEC about being the custodian and providing liquidity and providing a venue for buying this Bitcoin also from. So this gives also a lot of legitimacy to Coinbase US, wherein if they are facing SEC, they have big names backing them up. So these are, I think, the good things. I think trading के aspect से शौविक बता सकते हैं कि liquidity is king. So the more Actually, liquidity is there, the better the trading and the better the price movement. and the best part, Krish, is that people don't have to open a separate account to invest in that ETF. तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसके थ्रू ये लोग कर सकेंगे. हाँ, इंडियंस के लिए कुछ कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि अभी भी यूएस मार्केट में डायरेक्टली आप लोग ईटीएफ में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, बल्कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अलाउड है, और वो भी एलआरएस के थ्रू. तो एलआरएस आई थिंक इन्वेस्टर्स, मतलब हमारे व्यूअर्स को पता होगा, जो कि आरबीआई का ही एक बॉडी है, वो कंट्रोल करता है बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए. तो ये सब चीज है. और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो तो अलाउड नहीं होगा. शॉर्ट टर्म यहाँ पे मतलब हो गया आपका 36 मंथ्स, तो उसके नीचे नहीं होगा. उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी ज्यादा लगेगा. अगर किसी चैनल के थ्रू अलाउड भी होता है तो रफली 30%. बट ये जो फिगर है ना अभी, उतना मतलब डेफिनेट नहीं है, ये सब फिगर चेंज हो सकता है. बट हाँ, यूजुअली इतना होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपका 30% के आसपास लगेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए वो 20% के आसपास लग जाएगा. और बाकी सारा तो जैसे टैक्सेशन है वो सब तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब क्लैरिटी आएगा थोड़ा. तो बेसिकली अभी जैसे आप क्रिप्टो खरीदते हो और आप क्रिप्टो सेल करते हो तो उसके ऊपर 30% फ्लैट टैक्सेस है. तो अभी ईटीएफ ने आके ये क्या कर दिया, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड यू आर समबडी हु बिलीव्स इन होल्डिंग और हॉडलिंग व्हिचएवर, तो आप डायरेक्टली ईटीएफ खरीद सकते हो और यू कैन होल्ड दिस ईटीएफ. Of course, if you don't sell it for 36 months, this ETF will still be giving you returns because it will closely follow the Bitcoin pattern. And आपको after liquidating, you can do like 20% capital gains tax on the Bitcoin ETF. But this is only on Bitcoin, no other altcoins yet. Which is also a good thing क्योंकि आगे जाके this Bitcoin ETF will be a precedent for altcoin, altcoin ETF baskets, all these kind of things. different sort of I think ETFs. a lot of people are trying to do it much before. जैसे
इंडिया में मुद्रेक्स है जिन्होंने ऑल्ट कॉइन बास्केट्स लॉन्च किए थे बहुत पहले. Then there is a company called Bitsave which is doing non-custodial, you know, non-custodial kind of ETF basket for altcoin as well as other crypto. For following, I think There's a startup called some Coin Basket as well. yeah, coin basket. So there's a many kind of things which are in the crypto space, but वही चीज अभी institutional space में आने वाला है and completely legit, completely legal. People can just invest money. There's a proper custodian. So that is where I think the challenge will be for the government. Ki, if these are already there, why it is not available in India, right? So Right. this also opens some sort of pressure on the government. Ki if this is already there outside, why it is not here in India? So this will actually spur a lot of regulatory moves from the government. And कुछ तो आप देख भी पा रहे हो, which will come to later on. But this is the overall scenario that's going to happen, मेरे हिसाब से. Do you want to add anything, Sam or Shovik? I just want No, to add one thing yeah. is like हम लोग जितना अभी तक बात किए हैं for the last 5-6 months on this podcast about like Gary Gensler being the person जो who is anti crypto, and today वो नहीं चाहते once थे, the लाइक बेसिकली वो yeah नहीं चाहते थे कि उनके टेन्योर में ये बिटकॉइन ईटीएफ का जो सागा है वो पास हो, बिकॉज he has been anti crypto from the beginning and right, he has been forced to show his hand, and no matter what he had to go and approve this ETF because he was challenged. but So I you'll think this find it very brings an end. interesting is like there were 5 votes and Gary Gensler voted for crypto. So if he would have not voted for crypto, then it would have been a different scenario. But Mr. नहीं, Gary क्योंकि Gensler, क्योंकि अगर वो वोट क्रिप्टो के अगेंस्ट में वोट करते हैं थे तो ही वुड हैव बीन चैलेंज्ड पर्सनली एज वेल, कि लाइक व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट, not just as an SEC head. So there would be a challenge for him from the SEC, ki like internally why you are not doing it, what's the problem, because he has already taken a lot of time, and right, 10th was the time when he had to either accept or reject, जो कि हम लोगों ने सोचा था कि दे ऑलरेडी could have extended it for another couple of months, जो मेरे को लगता था कि they should have done it. But then if they do that, Gary Gensler's, I think the term ends like March 31 or something this year. So he didn't want to cut it so close, right? So at least he needs to get something done, get over with it. And अभी इसके बाद वो फिर से कुछ ना कुछ क्रिप्टो कंपनीज के बाद जा सकते हैं to prove that crypto is not all great. so But Akhilesh, you anyways, should know, like the tweet came up just before it was announced yesterday that it's already approved. Then Gary Gensler came in and like, no, ऐसा नहीं हुआ था. We are how Twitter was hacked. And after that day, I think many people have shorted Bitcoin. I know some of them. जिनको लग रहा था कि नहीं, अगर गैरी गेंसलर आके बोल रहे हैं कि दिस इज लाइक अ फेक न्यूज, देन तो नेगेटिव ही आने वाला है न्यूज. मेरे मेरे हिसाब से आई थिंक कि जैसे पता है आपको कि लाइक ट्विटर प्रॉब्ली गैरी गेंसलर का ट्विटर वो खुद तो हैंडल नहीं करते हैं. नहीं नहीं, He is द too busy एसीसी for doing this. ट्विटर So आई थिंक. some intern, somebody actually was handling it, and by mistake he sent the tweet before it was meant, right? Got played So actually. Yeah, so this was he like could a not, good gameplay he maybe. cannot go, yeah, he cannot go and say that okay, yes, I have approved it before actually the official announcement. And if he cannot say anything, he cannot keep quiet also. Then he has to say, okay, this is hacked. So it Right. was a very unfortunate position, and somebody might have played a prank या फिर जानबूझ के ऐसे किया गया था. Or maybe Anyways, it was part of the we'll plan. talk more. Maybe it was part of the plan. Anyways, we'll talk more about this. But उसके Right. बाद चलते और एक बहुत अच्छे न्यूज में. So stablecoin firm Circle USDC wants to file for a US IPO. So I think this is not such a great move from Circle personally. क्योंकि if Circle is talking about uh, money on the go, तो कोई भी कंपनी के लिए जो बोलता है कि लाइक दे आर हेल्पिंग डूइंग मनी ऑन द गो एंड दे आर अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स एंड अदर थिंग्स, अगर वो आईपीओ करते हैं तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस जो है काफी बढ़ जाएगा. And since Mm. crypto is already like programmable money, and Circle can actually block anybody's money. So if you are a person who even have nothing to do with, let's say, US policy, US laws, etc., and by definition, if somebody from a even like a sanctioned country or
कोई बैड वॉलेट आपको यूएसडीसी भेज देता है, सो सर्कल हैज द राइट टू ब्लॉक ऑल योर फंड्स. So imagine now कि Circle has, and Circle नहीं, TRN Labs and Cyphertrace and Chain Analysis, Elliptic, all these, they have identified few bad wallets, and these bad wallets know the wallet address of, let's say, somebody who is a US politician or some European politician, and uske funds में directly they transfer $5,000, $10,000, some amount of money, just to force them to be doxxed and block their sum. So US government has the right to ask Circle to actually block these funds, right? So Circle will already be under such a pressure कि उनको ये follow करना हो. Right now it's like an unwritten code, let's say. But उसके बाद अगर वो यूएस में ही आईपीओ फाइल करता है, this will become quite risky for anybody to hold their asset on just Circle for few of these reasons. क्योंकि कोई आदमी जो यूएस में काम भी नहीं करता है, यूएस के साथ कोई रिलेशन भी नहीं है, but if the US government wants, they can come and block his account. So that's how bad things can get basically. But on the good side, अगर ये होता है, then it will become easy for financial institutions, banks, payment companies, remittance companies, B2B payments, all these to use USDC along with US dollar, like a one-to-one basis. So yeah, pros and cons है, but cons कुछ ज़्यादा scary है pros से. So I think it's something which we should take with a pinch of salt. So we can Sam, what do you think? I think it's good to some extent. Basically, what they are trying to do is like to basically to raise the fund from the public. ठीक है, तो ये तो एक इशू हो गया. क्योंकि देखिए अगर किसी का फंड का क्रंच होता है ना, तो अल्टीमेटली एक ना एक पॉइंट पे जाके उसको कोई ना कोई हल निकालना होता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मतलब फाइनल कोई एक ब्लो होगा या फिर फाइनल डिसीजन है, बट सर्वाइव करने के लिए ये ऑप्शन अभी उन लोग के पास फिजिबल लग रहा है. और वो भी तब जब बुल मार्केट स्टार्ट होने वाला है, या फिर आप ऑलरेडी कर सकते हो कि स्टार्ट हो चुका है. तो फिर एक सेंटिमेंट जो बना हुआ है मार्केट में, काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट है, जो उन लोग को हेल्प करेगा काफी हद तक आगे जाने के लिए. तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन ठीक ही है. And on top of और it, I जहां तक think आपका सवाल है कि ब्लॉक करना, फंड को रेस्ट्रिक्ट करना, ये सब चीज तो कहीं भी हो सकता है, राइट? किसी भी ये मतलब जुरिडिक्शन कोई भी में कर जाके सकता हो है, सकता है. कोई भी कर सकता एग्जैक्टली. है, बट आई थिंक इट्स अनफेयर कि यूएस में बैठ के यूएस एसईसी या यूएस कांग्रेस या यूएस कोई एजेंसी सर्कल को बोलता है कि we don't like this guy because he is doing business with somebody, and that somebody is US's enemy or US's competitor or something, so you block funds for all of the other people, and which is a reality. ये हो ही सकता है. So imagine you are using a crypto app. Let's say you are using ABC exchange, which is regulated in India, and they only allow Indians to come on board, deposit INR, use crypto, deposit, withdraw crypto, and go out. And then suddenly they are using USDC, and then Circle is asked, freeze his account, and Circle freezes his account. And this guy has never done anything against US. Probably he just receives some bad money, and this guy cannot also prove like how he got that bad money, how this money was transferred, because probably he done some P2P, right? तो मतलब ऐसा बहुत सारी चीजें कि without knowing you might get into trouble, and because of that all your funds might be stuck. So that is the undue power that Circle has, and Circle will give to basically pass it on to their government. तो डॉलराइजेशन तो एक प्रॉब्लम था ही. अब डॉलराइजेशन के साथ साथ प्रोग्रामेबल मनी एंड यू कैन ब्लॉक इट एनी टाइम, दैट आल्सो बिकम्स एन इशू. सैम, आप चुपचाप हो गए, क्या बात है? I'm just listening to you guys. But I think this is मतलब ये जो problem है ये सब stable coins के साथ ही. अगर if US government comes in and says to a stable coin that I want this to be done, so I think most of the stable coin companies जो कि centralized stable coins है उनको मानना ही पड़ेगा. Maybe they will do it in a some time, या उनको थोड़ा सा बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, but
I think this देखिए is something जो हम लोग बात करते हैं centralized और मानना decentralized का कोई जो problems. नहीं, मानना कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप बोल रहे हो कि यस दिस गाय इज बैड एंड हियर इज अ प्रूफ, हियर इज अ कोर्ट ऑर्डर मींस दैट okay fine go and block it because that guy has 90 days to respond, right? But without court order, if you block somebody's money, how he is going to take it to court कि भाई उनके साथ कुछ गलत हुआ है, because he doesn't know what has happened. जैसे इंडिया में क्या होता है कि P2P फ्रॉड के कारण बहुत टाइम बैंक में होल्ड हो जाता है, बैंक फ्रीज हो जाता है, बैंक बताता भी नहीं है अपने यूजर्स को कि उनका पैसा होल्ड हो गया है, पैसा फ्रीज हो गया है, एंड दिस इज रॉन्ग फ्रॉम द बैंक ओन गाइडलाइंस ऑफ हाउ दे आर गोइंग टू सर्व यूजर्स. आप किसी का पैसा ब्लॉक कर रहे हो तो यू हैव टू टेल द यूजर कि भाई योर मनी इज ब्लॉक, come and talk with us, or your money is blocked, here is an email, please send us an email, do something. तो अगर वैसे होल्ड कर देता है and you then come to know it's on hold and you need the money, you cannot take it out also, right? So same thing is going to happen with these kind of things as well. But at least in India you have like multiple ways to raise the issues, go to the RBI ombudsman and then talk with the agencies that has asked a hold or asked for a freeze, and then you can come to a solution ki bhai you can say that I have not done anything wrong and these are the proofs, right? But it takes time. But कोई बंदा अगर इंडिया में बैठा है and उसका फंड यूएस से फ्रीज हो रहा है, how he is going to talk with anybody there? He doesn't know anything, right? And he has no proof to show कि सर्कल ने उसका अकाउंट किस लिए बैन किया है या बंद किया है. So that is going to be the problem because there is no like order against which you can fight. It's just arbitrary. मेरे हिसाब से क्रिस ऐसा अगर कुछ इश्यूज होता है ना तो क्रेडिबिलिटी ऐसे कि अपने आप ही वो लूज कर जाता है ना कि मार्केट लेकिन में इस तरह से अगर लेकिन होता है कोई पर्टिकुलर एक्सचेंज या फिर पर्टिकुलर स्टेबल कॉइन के साथ तो वो खुद ही अपना क्रेडिबिलिटी लूज कर देगा मार्केट में और तो ऐसा मेरे नहीं है हिसाब कि से मार्केट सर्कल में इज अकेले ऑलरेडी नॉट थिंकिंग ऑफ दिस, सर्कल इज थिंकिंग मच अहेड ऑफ दिस. तो उनको वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, दे आर लुकिंग इनटू द B2B सेगमेंट, दे आर लुकिंग इनटू पेमेंट्स, दे आर लुकिंग इनटू you know working with banks, financial institutes. But this basically means circle is going to lose the war on the crypto side ki they are the stable coin in crypto space for exchanges to list on and use, right? Because once it happens on some exchange, on some wallet which circle is supporting, others are going to freak out, nobody is going to hold USDC there. Right. So they करेक्ट are actually moving away from this space, I think, taking a bigger jump and hoping कि जो काम आज स्विफ्ट कर रहा है, decade to decades later, they are also a big player in that space. So that is their game plan. So yeah, ETF के बाद Goldman Sachs, said that institutions are likely to get benefited. No wonder, it's Goldman Sachs. But benefits तो बहुत सारी चीजों से हो सकती है. I think the biggest benefit that they will get is क्रिस like क्रिस नो pun intended but is it the same Goldman Sachs that Yes. same no no company no which that, couple of years no back no. Goldman Sachs actually stays away from any controversy. I think it was Jamie Dimon. It was not Goldman Sachs. So yeah, so Jamie Dimon ने कहा था कि Bitcoin is a Ponzi and this and that. And कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि if he was the regulator, he would have uh, banned Bitcoin in US. And the same week he hired or tripled his team in the crypto segment. So yeah, that's how things work. So anyway, let's move on. So some congressmen actually went ahead and bought cryptocurrency and declared it कि he has bought cryptocurrency, which is a good thing. So he has declared some amount of crypto that he has bought. So जैसे इंडिया में आपको डिक्लेयर करना होता है कि आपके पास क्या क्या है, क्या एसेट है, क्या नहीं है. यूएस में यू हैव टू आल्सो डिक्लेयर इफ यू आर बाइंग क्रिप्टो कि what are the assets you are investing in, or if you're buying stock, what is the stock you are investing in, so that you cannot do any shady deals behind somebody to influence that stock price or influence the company, etc. So as I was saying कि Bitcoin
प्राइसिंग जो कि अभी चल रहा है 47,600, इट मूव्ड क्वाइट अ लॉट. तो इसके साथ with this I think it will become straightforward for other ETFs, especially Ethereum ETF, to come on board. So Bitcoin ETF, Ethereum ETF, multi-coin, multi-alt ETF, all these ETFs will actually increase the prices of these altcoin as well as Bitcoin quite significantly. और इससे ये भी होगा कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में आएंगे जो कि अभी तक नहीं थे. फॉर एग्जांपल, Bitcoin loan you cannot take from any reputed institution right now. You can go to DeFi, you can go to some CeFi companies and you can take a loan against your Bitcoin. But now because of these ETFs, you can just buy an ETF and then you can take a loan against that ETF. Any bank is going to give you a loan against that ETF, right? तो इससे क्या होगा कि if you believe in this, you can actually leverage whatever investment you have to not sell completely, but to ensure that कि हाँ आपके पास enough liquidity है to cover your cost, or take that money and trade again. So these things will open up multiple derivatives as well, wherein you have layering to use different layers for. जैसे होता है ना कि आपने लूप करते रहते हो DeFi में, तो उसी टाइप से आप institutional ETF में भी लूप करते रह सकते हो if you want. So these will bring in quite a lot of liquidity in the space and lot of demand in the space basically. And इससे ये भी हो सकता है कि if people are smart enough, they will use their debt to leverage this, and they will pay off their debt and not pay any capital gains because they're just paying off their debt, right? And they will have a lot of exposure to Bitcoin for later stages. So all these things are going to happen, and I think the regulators and CA should catch up soon, क्योंकि दिस विल गो ऑन फॉर सम टाइम, कि उसके बाद ही जाके 1-1.5 साल में या 2 साल में रेगुलेटर्स और सीएस को ये पता चलेगा कि सही से किस तरीके से ये इसको यूज कर रहे हैं. So this is the grayscale Bitcoin ETF. Basically, somebody posted it, so you can go and you can search on the ETFs that has been accepted. Grayscale is one of them, which is charging I think 1.5%. Then BlackRock is there, Invesco is there, ARK ETF is there. So these are the 4-5 names that came to my mind. And with this, I'll come to the Indian part of the news, which I think is before this yes. we move to this news, I think Shavik can, because we have been talking I about think ETFs. Shavik can go Yes. last today. Okay. Let's finish the news. Shavik can go last today. Let him be the showstopper. I think today is green, so he has a lot of things to say. तो Yeah. जैसे हम लोग कह रहे थे आपको बहुत दिनों से कि सूनर और लेटर इंडियन गवर्नमेंट एप्पल स्टोर, गूगल स्टोर को बोलने वाला है कि बैन दिस एप्स, and they are going to ban their URLs as well. So this is what is happening. तो इंडियन गवर्नमेंट FIU ने बेसिकली इनको कहा है कि you should follow the FIU laws and then you should register under the FIU, bearing which we will block your app on the app store. तो कोई भी नए इंडियन यूजर्स के लिए ये ऐप अवेलेबल नहीं है. I think there are almost 9 other, total 9 exchanges. Binance, KuCoin, OKX are the big ones. There's like Bitstamp and I think MEXC and all these. You can find the names there somewhere. And this basically is the pressure tactics, जो कि foreign exchange को ये बोल रहा है कि you either play by our rules or you don't play at all. तो इसके बाद next step ये होगा कि whoever is having money on foreign exchanges, they will be asked to bring it to Indian exchanges, or they'll be forced to bring it to Indian exchanges, because government might tell them if you are having money in other places which are not regulated or registered with us, then it basically means you are violating security laws or FEMA laws or whatever. So slowly and slowly we will be going there, where either foreign exchanges has to come in, register themselves and play according to whatever the Indian FIU registered entities are doing, or they just go the other way of DeFi, that they don't really care and they're not going to register in India. And if people want to use their app, use their website, they have to use other means. They just cannot do it simply anymore.
I think that's it. Market is green. Over to you, Shobik. Sure. Right. So Thanks, before Krish. Krish, we move to the next part. I'll just have one or two questions for you, maybe, because I've got a lot of questions for this uh, finance thing that people are very scared about it. It's like ये जो Binance, KuCoin या foreign exchanges ban हो रहे हैं. So what should they do? Should they move their money to their private wallets? Because there are pros and cons to all the alternatives that are there. So basically, if they are moving to their private wallets, then basically they have to swap it, and if the capital is not that big, they have to pay a lot of gas fees for transferring that amount, and it will be not that easily tradable as well. On the second part, it's like if they are moving it to a Indian exchange on a FIU registered Indian exchange, so then they are coming under again the FIU laws, and if they are selling and buying anything, and with the changing laws, it may hamper their streak or their trades. So बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि अभी जैसे बाइनेंस को ऐप स्टोर से हटा दिया गया है, सो शुड दे टेक आउट देयर मनी और शुड दे वेट फॉर क्लैरिफिकेशंस और should they move it to private wallets, should they move it to Indian wallets? What's your देखिए, say on it? बाइनेंस ने खुद कहा है कि मूविंग फॉरवर्ड दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ न्यू यूजर्स ऑन टू बाइनेंस. तो जिनके पास है ऑलरेडी केवाईसी अकाउंट्स, फाइन, दे हैव इट, बट न्यू यूजर्स विल नॉट बी एबल टू यूज इट. फॉर Right. ओल्ड यूजर्स हु हैव मनी ऑन बाइनेंस, okay, fine, you will lose some money on the spread, you will lose some money on the fee, but at the end of the day, if you're not able to access that money, what good is Mhm. it? कि अगर इंडिया आके कल बाइनेंस को बोलता है, लॉक एवरीबॉडी आउट, एंड बाइनेंस गिव्स यू एन अल्टीमेटम, या मूव आउट in 3 months time or 6 months time, probably they will not do, but that's the worst case scenario, right? So why do you Mhm. want to keep things on an exchange where there is a chance that things will not be right? So basically मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास बाइनेंस में है, and if you don't want to move it to India, at least move it to some other non-custodial wallet and keep it there. और ऐसा अगर कुछ exotic coins है जो which you don't think that you will be able to sell easily, just sell it on Binance, convert to USDT and then get the USDT outside. Indian exchange में लाने का फायदा ये है, anytime you want you can just sell it for INR, you can get the INR. And yeah, if I registered here, so probably you will not face issues of your bank account getting blocked or hold or all these things. आप P2P करना चाहते हो, you can do P2P as well, but then the risk again persists कि Right. if that other guy is actually compliant with TDS or not, if the other guy will report you or not, if your money is getting blocked or not. Because the problem with P2P is not that you save 1%, is that the rest 99% is in trouble. तो बहुतों को ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्यों गवर्नमेंट को 1% टीडीएस दूं, because at the end of the day you can get it back when you file the taxes. All the government wants to know is where you are getting this crypto from. You are trading, you should pay the taxes if you are making a profit. If you are just holding, you don't have to worry about it. You can tell the government, hey, I was just holding it. And you should wait when the government comes with beneficial tax regime. Maybe then it's a time for you to sell, because now if you sell there's a 30% taxes. Right. So all these things considered, अगर आपका पैसा किसी भी ऐसे ऐप में है जिसको आप ऐप स्टोर के थ्रू आप लाइक लीगली डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, एंड यू कैन नॉट एक्सेस देम, मे बी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो, बट आई थिंक सम ऑफ द पीपल हैव कंप्लेन दैट देयर वेबसाइट लिंक इज आल्सो नॉट वर्किंग. So it's better for you to take the money out, put it in non-custodial wallets, and then think what is the right way for you to go ahead. Do you want to put it in Indian exchanges? Do you want to put it in some dexes or use some dexes to trade? Whatever. Because at the end of the day, you have to get the INR out. Once you get the INR out, it will hit your bank account, it will hit your tax statement, whatever. You have to explain to the government. So you should be prepared of trying to save that 1%, how to protect that 99%, and then think of how the government is going to come and ask you for questions. So there's no point in doing that. ये तो Okay. पर्सनली मेरा व्यू है, क्योंकि जैसे होता है ना कि अभी रिसेंटली एक मूवी देखा था मैंने, 12th फेल. तो एक झूठ को बचाने के लिए और एक झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं Right. लगता. तो बेसिकली इट्स लाइक दैट, लाइक वंस यू आर क्लीन, you are clean. You don't have to worry about thinking the government might stop me, or income tax might send me a tax filing कि ये आपका ये मैच नहीं कर रहा है, और
some exchange is going to get blocked and your money is going to go away, whatever. और मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ, I'm always in a proponent of it कि if you are investing in crypto, have some of it in non-custodial wallets, because you don't know what is the risk of that exchange. No matter how good it is, no matter how great it is, there's always a risk. तो ये तो हो गया मेरा व्यू. शौविक, what do you think? मेरे हिसाब से वही सेम चीज करना चाहिए. अभी बिनांस में रख के, मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन या ऐसा कुछ नहीं है, कि जो भी एक्सचेंज इंडिया पे कंप्लाई नहीं कर रहा है, रेगुलेटर्स को, मतलब रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, वहां पे आप अपना पैसा रख के आप बहुत ज्यादा ही रिस्क ले रहे हो. आपको याद होगा कि एफटीएक्स का जब इश्यू हुआ था, तब बहुत सारे लोग उससे निकल नहीं पाए. लूना क्रैश जब हुआ था, बहुत सारे लोग उसको सेल नहीं कर पाए. तो आप ये सब फेनोमेना जो है पहले पास्ट में हो चुका है काफी बार. और इस टाइप का अगर कोई एक दिन आता है कि अचानक से यूआरएल ब्लॉक हो जाता है, ऐप बंद हो जाता है, कुछ भी होता है, तो फिर आप सोचो रातों रात आपका जो पैसा था, मतलब वो चला जाएगा ना, तो आप उससे निकल भी नहीं पाओगे. यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा. आई थिंक दैट वुड बी क्वाइट जस्टिफाइड. कुछ साल पहले, कुछ साल नहीं, मतलब 2-3 साल पहले वर्ल्ड का जो इशू हुआ था, राइट? तो वर्ल्ड में भी अभी बहुत सारे इंडियंस अभी भी है जिसका वर्ल्ड में मतलब पैसा फंसे हुए हैं. हाँ, वो केस चल रहा है, वो सब चीज है, लेकिन उन लोगों को अभी कुछ मिला तो नहीं है ना, राइट? तो उसी तरह का एक सिचुएशन में आप फिर से फंस जाओगे. तो इससे बेटर है कि आप वहां से मूव कर लो अपना एसेट्स जो है. Right. Understood. So और what's the ये तो next ये बात question? हो गई. Yeah. So next question is like जैसे अभी 11 ETFs sanction हुए हैं, approved हुए हैं, and just before the ETFs were approved, we have seen that there were so many fees wars. जैसे सब लोग अपना फीस को कम से कम रखना चाह रहे initially so that they can get in a lot of institutional attention, या buyers will come in and buy the ETFs from them. So what do you think, like going forward, will this war continue or people move to put in money to the ETFs देखिए, which has the lowest fees, or क्या सीन आपके ऐसा नहीं होने वाला है कि हमेशा लोएस्ट फीस ही विन करेगा. If that is the case, then any exchange which can come and say, hey, I'm giving you 5 bips of fees every trade, or 10 bips of fees every trade, they will win. तो बहुत सारे चीज, बहुत सारे फैक्टर्स है. फॉर एग्जांपल, who is the custodian? For example, where is they sourcing the liquidity from? At what price they're actually buying the Bitcoin? क्योंकि buying Bitcoin here with INR, buying Bitcoin with USD, buying Bitcoin with Taiwan dollar, all are different, right? Buying Bitcoin with USDT even in different parts of the country is very different. So liquidity is always a major thing. कि how liquid is this ETF, and what are the other things that this ETF will allow you to do. For example, समझ लीजिए ETF A is giving you 0.3% flat on a yearly basis, ठीक है? ETF B gives you 1.5%, charges you 1.5%, but you can take a loan of up to 70% at 5% or 7% or 10%, right? And you can use this for whatever purpose you want, right? Then ETSC gives, like, charges you 1%, but you can take a margin and you can trade with any of the stocks or any other things inside that platform. So it's not just the ETF and the pricing, but also उसके साथ आपको क्या दे रहा है वो broker, या उसके साथ आपको क्या दे रहा है वो asset manager. And that's the first thing, right? Second thing है कि who is doing that? कि अगर grayscale कर रहा है या अगर BlackRock कर रहा है, there's a difference to the scale of what grayscale can do and what BlackRock can do, and who BlackRock can reach and who grayscale can reach, right? So all these things will matter because at the end of the day, asset managers own liability and own name is on the line as well. Right. So Shravik? the more innovative people can get, I think the more that ETF is going to succeed in. Shravik, आपका कुछ विचार है इस बारे No, में? I think Chris is pretty much has said everything about it. Okay, so I think my questions are done. I think these are some of the questions that people may also have, because मैं ये कहीं कहीं पे, because I always read comments a lot below the post, so मुझे ये सब कहीं ना कहीं comments में मिलते हैं ऐसे questions, which I try to get through.
from you when we do this kind of a podcast. So चलिए हम लोग अब चलते हैं शौविक जी के पास और आज के हरियाली एक्चुअली का क्रिश बात कर या लेते हैं। एक्चुअली क्रिश तब हम लोग डिस्कस कर रहे थे 47,700 पे था, अभी ट्रेडिंग व्यू पे दिखा रहा है 48,200, 300, 362 लाइक दैट। सो इट्स मूविंग रियली वेरी फास्ट। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे बीटीसी यूएसडीटी का जो चार्ट है वो किस तरह से प्ले आउट यहाँ पे हो रहा है। तो टेक्निकल देखिए ईटीएफ जो है ये तो एक इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट काफी जो है फंडामेंटल को चेंज कर देता है। तो आप लोग जो भी क्रिप्टो मार्केट में हो तो उन लोग को पता ही होगा कि टेक्निकल एनालिसिस एक पार्ट है और फंडामेंटल भी एक चीज है। फंडामेंटल जो है ना वो एक्चुअली मार्केट का डायनामिक्स चेंज करता है। तो आप लोग को वो काफी अच्छे से स्टडी करना होता है ताकि आगे जाके लॉन्ग टर्म में आप लोग का इन्वेस्टमेंट किस किस एसेट्स में होगा या फिर किस कॉइन्स में आप लोग अपना पैसा डाल सकते हो, ये डिसीजन लेने में आपको सुविधा हो। तो यहाँ पे पहले देखिए हम लोग टेक्निकल चार्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्निकल पैटर्न कैसा है क्या है। तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न जो है ये पहले कंटिन्यू हो रहा था, इस तरह के पोल और फ्लैग बना के फिर से यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत चल रहा था। ये बेसिकली रेंज डाउन वन में ये सब ये जो जोन है ना, इस जोन में एक्यूमुलेशन वगैरह ये सब चल रहा था डेली चार्ट में। तो अगर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो पूरा दिसंबर का महीना जो चला ये बेसिकली एक्यूमुलेशन चला यहाँ पे। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया था कि दिसंबर का जो टाइम होता है ना वहाँ पे लिक्विडिटी कम रहता है, उतना ज्यादा प्राइस मूवमेंट हम लोग को दिखने को नहीं मिलेगा। तो वैसा हुआ भी है काफी हद तक। और अभी जैसे न्यूज आया है ईटीएफ का अप्रूवल वगैरह ये सब आया है तो फिर तब जाके रैली जो है फिर से स्टार्ट हो गया है। और अच्छा चीज ये है कि इस एक्यूमुलेशन जोन के बाहर जाके ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को उसी तरह से फॉलो करना है। तो नेक्स्ट आप लोग को करना क्या होगा सैम, एक्चुअली मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। बेसिकली हमारे यूजर्स को इस प्राइस पॉइंट पे आके जो लोग आपको क्या लगता है कि मतलब उन लोगों का मन में क्या क्या सवाल आ सकता है? पहले मैं चाहूंगा उस सवालों को एड्रेस करना, उसके बाद टेक्निकल पैटर्न में आता हूँ। मेरे मन में तो एक ही सवाल आता है, व्हेन लैम्बो। तो मुझे तो लगता है अभी तो सबको फोमो हो रहा होगा कि अभी ले ले या बढ़ गया है बहुत, अभी के नीचे जाएगा। पीपल आर लाइक ओके नाउ द न्यूज़ इज हियर, सो यू नो अब तो नीचे नहीं जाने वाला, अब तो ऊपर ही इट्स गोइंग टू 150 के 500 के, ऐसे बहुत सारे स्पेकुलेशंस आ रहे हैं ट्विटर में। तो बोला देखिए जाता है ना, बाय द रूमर सेल द न्यूज। या सेल द मैं तो न्यूज। सिर्फ यही एक्चुअली चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा। तो दूसरा चीज होता है ना, बाय द रूमर और बाय द न्यूज हो जाता है कभी कभी। बट एनीवेज राइट। यहाँ पे हम लोग जब पॉडकास्ट स्टार्ट किए थे तो मुझे जहाँ तक याद है कि बीटीसी तब 26-27,000 के आसपास था। तो तब हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बताया था कि किस किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। हर एक 5,000 लेगेसी यू कैन से दैट, ऐसे करके। तो हाँ, फिर उस हिसाब से अगर हमारे व्यूअर्स वगैरह करे होंगे तो फिर ऑलरेडी उन लोग का मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रॉफिट पे ही वो लोग बैठे हुए होंगे। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हाँ, ईटीएफ जो है उसका न्यूज़ आ गया है मार्केट में, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा आप ऑल इन हो जाओ इसी प्राइस पॉइंट पे और एकदम बैठे रहो। हाँ, अभी तो ये कुछ एक प्राइस पॉइंट पे जाने वाला है, जैसे 100 के, 200 के, 300 के, ऐसा ऐसा जो मीम्स आ देखिए, रहा है ट्विटर में चल रहा है। जिसको खरीद इस- जिसको खरीदना है वो ऑलरेडी खरीद चुका है। अगर आप ये खरीद चार्ट चुका है देखते हो, वही मतलब वही वही। वहीं पे आप देख सकते मैं हो कि मैं कितने लंबे मैं लंबे बुर्ज खलीफा बन चुका है यहाँ पे। सो एक्चुअली एक्चुअली पीपल मैं हैव वही बॉट अ चीज मैं लॉट। बार बार एक्सप्लेन, मैं हर वीक में यही चीज एक्सप्लेन करता था कि जो जोन है ना, ये जोन पहले कभी नहीं हुआ है। तो इस तरह का वॉल्यूम जब भी आपको दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि काफी लंबा टाइम ये जो था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये काफी लंबा टाइम तक जो है एक्मुलेशन था। एक्यूमुलेशन चला है। बट हाँ, हम्म, ये भी था, ये भी एक चीज है कि ट्रेडर लोगों का एक्चुअली व्यू रहता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज बोलूंगा कि आप लोग फिलहाल मार्केट का सेंटीमेंट के साथ ही जाओ, ठीक है, उसका अगेंस्ट में जाने का जरूरत नहीं है। बट ये जो चीज है ना, जिन लोग को लगता है कि अभी मेरा रैली मिस हो गया है, ये सब अभी क्या होगा, मैंने तो बहुत पहले ही लेना था, तो वो होता है कभी कभी मन में ख्याल आता है ये सब चीज। तो उन लोग के लिए यही है कि आप लोग छोटा छोटा अमाउंट करके, थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ देख सकते हो। एक बार में पूरा नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही सकता है कि अभी जितना प्राइस पंप इन हुआ है ना, थोड़ा एक बहुत माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो उसमें आपको अच्छा सा और प्राइस मिल जाएगा ना। भले ही हो सकता है कि थोड़ा सा ही मतलब प्राइस वहां से करंट प्राइस या फिर स्पॉट प्राइस से थोड़ा सा नीचे जाए, लेकिन वही है कि जितना आपको कम में मिल रहा है उतना ही आपके लिए फायदा है, राइट। तो उस हिसाब से देखना है। और एक चीज है,
अभी तो BTC इथेरियम ये सब रैली करना स्टार्ट हुआ है। आप लोग को अभी अगर आप लोग थोड़ा सा गेम को और रिस्की प्ले करना चाहते हो तो फिर मेरे हिसाब से अभी ऑल्ट कॉइन के तरफ आप लोग को थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो है ना, वहां पे रिटर्न काफी अच्छा बन के आता है। तो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो थोड़ा सा सेफ साइड में रख के, जो कि BTC इथेरियम है, बाकी जो है आप अपना एक्सपोजर ऑल्ट कॉइन की तरफ देख सकते हो, और हमेशा रिस्क पर मैनेज करके। ये नहीं कि पूरा एकदम जितना कैपिटल वो से भी डाल दिए पर्टिकुलर एक कॉइन में, ऐसा नहीं। तो ऐसा है कि ऑल्ट कॉइन में अगर आप जा रहे हो या फिर कोई भी और चीज में जा रहे हो बिसाइड बिटकॉइन इथीरियम, तो एक चीज हमेशा ख्याल रखना कि हमेशा नए साइकिल में नए कॉइन ज्यादा पंप करते हैं। तो राइट। बेसिकली आप अगर ये सोचते हो कि अरे XRP एक टाइम में $3 $5 ऐसा कुछ गया था, या फिर EOS $21 $22 गया था, तो दिस और परपेचुअल प्रोटोकॉल 21 $22 गया था, तो इट विल गो टू दैट अगेन, तो लेट्स पुट द मनी हियर क्योंकि इट गिव्स मी 10x रिटर्न। पर ऐसा नहीं होता है। जनरली न्यू कॉइन्स जो है, जैसे समझ लीजिए L1s हो गए, मैंटल, L2s हो गए, सॉरी, आर्बिट्रम, Arbitrum, optimism. ऑप्टिमिज्म, ऑल दीज। फिर नए कुछ जैसे इंडेक्सेस हो गए, या फिर डीफाई प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे DYDX जो कि अभी रिसेंटली मूव किया है खुद के चेन में। So all these things which are new, which were there probably in the last bull run, but they were not there for the whole time. तो पूरा कैप्चर नहीं कर पाया बुल रन का साइकिल को, और दे लॉन्च एट द फैग एंड ऑफ द बुल रन। तो देन चांसेस आर कि उनका जो ऑल टाइम है ये ब्रेक करना, दैट विल बी मच मोर हायर। फॉर एग्जांपल जैसे लेयर वन में सुई एप्टोस आ गया है, सो सुई एप्टोस इज प्रॉब्ली गोइंग टू go for much higher highs than probably what Solana AVAX can do from here. Probably, I'm not 100% sure, but मैंने ये यही देखा है लास्ट दो साइकिल्स में। So if you are going to actually put in money into alts, put a bit more on newer alts which are probably in the infrastructure space. अब gamify और meme coin के बारे में I cannot say a lot, but infrastructure space में yeah, of course, you can और do a lot. वहाँ पे क्रिस और एक चीज भी यूजर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि कॉइन मार्केट कैप में जाके वहाँ पे रैंकिंग थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए। जो सब ऑल्ट कॉइन्स विद इन 30 है, वो सब ऑल्ट कॉइन्स मैं थोड़ा सा सेफ बेट मानूंगा, rather देन आप 200-300 किसी कॉइन में चले जाओ, उतना पीछे रैंकिंग वाला कॉइन में, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता है, राइट? तो थोड़ा बहुत फिल्टर लगा लो कि कौन कौन सा क्राइटेरिया के ऊपर आपको काम करना है, वो सब फिल्टर लगा के आपको काफी काफी अच्छा ऑल्ट कॉइन्स मिल जाएगा, आप उसमें बेट ले सकते हो। चलिए, आई I think थिंक इसी के दैट्स इट। साथ I yes. think we have come to an end. Yeah, Sam, you were having some questions. No, I'm just saying that ऐसे altcoins में और एक चीज आप कर सकते हो, वो है कि नैरेटिव प्ले कर सकते हो। आई थिंक कि अभी जैसे बहुत सारे नैरेटिव्स इस बार नए बन रहे हैं, जैसे पिछले बार गेमीफाई था, इस बार जैसे RWS का बहुत ज्यादा नैरेटिव है, फिर रोल अप्स का जेड के इकोसिस्टम्स के हैं। गेमीफाई गेमीफाई का तो इस बार भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आरडब्ल्यू का जो नैरेटिव है वो इंस्टीट्यूशन के लिए सही है या फिर बिग प्लेयर्स के लिए सही है। दैट इज नॉट रियली फॉर रिटेल पीपल, क्योंकि अगर आप आरडब्ल्यू का नैरेटिव देखते हो तो जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है विच इज ट्राइंग टू ब्रिंग ऑन चेन यील्ड फ्रॉम यूएस ट्रेजरीज। So you can buy those tokens and you will get 6-7% 5% on chain yield. तो क्या ही हो जाएगा उससे, because that is like stable coin which you are putting in into yield. That's it. तो हाँ, but that is something which institutions or big players will look into क्योंकि that gives them a safeguard, right? So that gives them an option to hedge their position अगर वो risky place कर रहे हैं। But for people in the retail space, what is that 5-7% going to do? अगर तो वो दूसरा कोई स्टॉक में भी डाल देते हैं तो आई थिंक इंडियन मार्केट इतना स्ट्रांग है कि एग्जैक्टली। 5-7% आराम से दे देगा। तो हमेशा इनफैक्ट आरडब्ल्यू इनफैक्ट मतलब ये ईयरली जो है म्यूचुअल फंड का अभी मतलब 12-15% स्टैंडर्ड जो के आसपास। बेंचमार्क है वो 15-20% ऑलरेडी है, तो फिर फाइव Right. सेवन हाँ, परसेंट का कोई सेंस नहीं बनता तो है। तो आरडब्ल्यूए जो बोल रहे हैं लोग, इट्स गुड फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे 0.5 0.7 1% 2% yield है, राइट? they are getting 7% yield or 6% yield, that's a lot without risking their capital. But if you are in the east and you already have much more ways to earn that 5-7% just by investing in stock, तो आप क्रिप्टो में क्यों दोगे उसको? और if people are talking about giving you 10% 20% yield, let's say 10 to 20% yield in this range,
even then it doesn't make sense to you, because in crypto you are coming in for higher returns. So 10-20% is not something you want to get in bull market. Let's be honest about it. कोई बियर मार्केट में कोई आके बोलता है कि भाई ठीक है मैं 10% दे रहा हूँ या 12% दे रहा हूँ या 18% दे रहा हूँ, it's okay, because then at that point you really don't know when the market is going to boom. Bull market ऐसा होता है कि you just close your eyes and choose a token and choose a coin and next day you wake up and it is going high. तो इस तरीके से होता है. So everybody becomes a trader, everybody becomes a profitable trader, and everybody is doing better than investing in stocks and other instruments. So at that point, RW I don't think is going to be that strong a factor. It's still important because this builds the basics for having a safeguard or having an option to hedge, जो कि पहले नहीं था. पहले there's only like you can just buy USDT and hold it, right? Or you अच्छा can risk it by staking somewhere. क्रिश, यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा. ये एक्चुअली जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स लोगों ने बहुत पहले ही पोजीशंस ले लिए हैं, जैसे 27-30 के आसपास, जब से हम लोग मतलब स्टार्ट किए थे रेकमेंड करना थोड़ा बहुत. तो उन लोग के लिए अभी हो ये सकता है ना कि उन लोग अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होंगे तो फिर उन लोग की ये लगता होगा कि अरे ये तो बहुत रिटर्न हो गया, अभी चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं. ऐसा बिल्कुल मत करो. ये क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट नहीं है. तो आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस को जितना देर हाँ, रहोगे वो क्योंकि डिफरेंस अभी धीरे धीरे तक आपको समझ में आ अभी जाएगा. अभी लेकिन हाँ, अभी आप तक ये कर सकते बुल हो कि मार्केट नहीं आया है. I तो think I मैं वही just want बात to कर say रहा हूँ that. कि उन लोगों को मतलब एक माइंड में सेट करना है. चलो कोई भी एक पॉइंट अपने अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, जैसे कि किसी ने 40K होगा, किसी का 35K होगा. तो पहले पहले जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं उस तरह का एक बेंचमार्क सेट कर, या बेंचमार्क नहीं, उस तरह के आप कह सकते हो कि एक ट्रिगर सेट कर लो, ठीक है. उस प्राइस पॉइंट पे अगर बीटीसी आता है तो फिर मैं सेल ऑफ कर दूंगा, तो भी कुछ प्रॉफिट लेके ही मार्केट से जाऊंगा. और जितना जितना बीटीसी ऊपर जाएगा, आप 10,000 का जो है ना आपका जो स्टॉप लॉस आप कह सकते हो, या फिर 5,000, वो शिफ्ट करते जाओ ऊपर की तरफ, ट्रेल करते जाओ बेसिकली. तो बुल साइकिल का एंड में देखो आप कितना प्रॉफिट लेके जाते हो मार्केट से. होपफुली ये थोड़ा सा हेल्प करेगा हम लोग के यूजर्स के लिए, या फिर सभी को. दैट्स इट क्रिश. Right. So I think with this, we have come towards the end of this episode. Thank you all for joining in from whichever platform you are from watching this. Thanks all, and do make sure you follow us, you subscribe to our channel so that you get notified whenever we are doing this kind of uh, podcast or live sessions. So stay tuned, guys, and hope that next week we'll also see this green candles and we'll have a lot more good news for everybody to share. Thank you all for joining in. Bye bye. See you Thank you. next week. Thank you everyone. Bye bye.